इस वीडियो में हम सिखाएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। हाउ डू वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर x? नाउ बिकॉज पावर में भी x है, दैट मीन्स देयर इज नॉट अ कांस्टेंट इन द एक्सपोनेंट इन द पावर, बट देयर इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज x इटसेल्फ। तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको x टू द पावर n का फॉर्मूला, ddx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक log ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, taking log on both sides, and when we are taking log on both sides, then by default हम यहाँ पे assume करेंगे that we are taking log to the base e. So taking log on both sides, we have log y is equal to log of x to the power x. That means log y. Now log of a to the power b में, if there is log of a to the power b, तो वो b सामने आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। The exponent gets multiplied at the front. So ये हो जाएगा x log x. The power of the exponent comes out in the front. तो ये हो जाएगा x log x. Now we will differentiate on both sides. So now when we differentiate on both sides, we have ddx of log y is equal to ddx of x log x.